कितना अर्सा हो गया इधर काम करते हुए? मुझे 2-3 साल हो गए। जब छोटी सी थी तो मम्मा ने मुझे सिखा दिया आप लोग, अब मुझे 5 साल हो गए करते हुए। क्यों करते हैं काम? घर में तंगी है, बाबा बीमार है और मैं नहीं करूँगा और कौन करेगा काम। हमारे घर के हालात सही नहीं है इसलिए मैं पेपर सिलाई करती हूँ। कितने पैसे कमा लेते हो? कभी 800 कमा लेता हूँ हफ्ते का, कभी 1000 रुपया, कभी 3000, कभी 4000 बना लेते हैं। जो कमाते हो उससे घर का खर्चा चल जाता है? काम करना अच्छा लगता है? तो क्या करना चाहते हो? मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। We all see dreams. Dreams of a beautiful future. Dreams we wish to live when we wake up. But among us, there are millions of children who wake up with shattered dreams and a fear to work for hours of back-breaking labor. Some see the reflection of their blurred dreams in the clear glass. Some transport the unbearable load on their tiny shoulders. Some fix the machinery that will never work this way. Children as young as 5 are kept from schools, forced to work for ruthless hours in a day, and end up with crippling injuries and chronic pain. Though we have become immune to this terrible situation, there is a job that is not only less visible and unknown to many, but is highly hazardous too. It's the job in the tanning industry. Tanning is not only Pakistan's second largest export industry, but it also employs 500,000 people directly and contributes 5% to the country's GDP and 5.4% to the overall export earnings. District Kasur in Punjab, with its 200 plus tanneries, represents almost 1/3 of the total number of tanneries in Pakistan. For this industry, child labor means greater profits by engaging cheap labor. For the families, it's their only way to survive as their children become economic units. बेसिकली ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी टैनरीज हैं जहाँ पे बच्चे और बड़े मिलके चमड़े के कारोबार में मुलव्वस हैं। चमड़ा साफ़ करने में, खालों को साफ़ करने में बेशुमार बच्चे हैं वो इस वजह से जा रहे हैं कि गुर्बत बहुत है, वालिदैन उनको साथ अटैच करके लेके जाते हैं। With poverty on the rise and literacy rate at just 8%, the population living in Kasur is extremely vulnerable. Union Councils 5 and 6 representing the most deteriorating situation, with an average monthly income of just $60. Here, children like Faisal and Shaheen are putting their lives and health at stake to earn $2 a day for the survival of their families, with no hopes for a better life. काम चमड़े का मजबूरन करता हूँ। जब मैं टैंटरी में काम करता हूँ, यहाँ की बदबू, गंदगी मुझे बीमार कर देती है। मेरा सर दर्द होता है, उल्टी आती है, थक भी जाता हूँ क्योंकि काम करना भी होता है कि करते जा रहा हूँ। For Faisal, life is as tough as that of many of his co-workers. But for Shaheen, it's a different story altogether. Being physically challenged, just the act of holding the tools to work is a challenge she faces every day. एक हाथ मेरा काम नहीं करता इसलिए मैं एक हाथ से सिलाई करती हूँ। मैं एक दिन में आधी आइटम सिल लेती हूँ। 1 बजे तक रात को बैठी रहती हूँ और सिलाई करके फिर सोती हूँ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੌਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੌਣਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਣ ਇਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਵੱਡੀਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ मेरी आंखें इतनी दर्द होती है, मेरे हाथ भी इतने दर्द होते हैं। मैं रोती हूँ, कहती हूँ मैंने नहीं करना, फिर भी मजबूरी करना पड़ता है। For hundreds of children like Faisal and Shaheen, who work in the tanning industry, life seemed a never-ending struggle. The money they were earning for their families was not helping them live a better life. it was just to make ends meet.
As for their parents, any hope of providing their children with the environment they deserved remained but a distant dream. ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਟੈਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪਿਆ। मेरा पढ़ने का बहुत दिल करता है, पढ़ नहीं सकते क्योंकि आज वक्त ऐसा बन चुका है, काम करने वाला बंदा पढ़ नहीं सकता। Alpha Foundation, with the support of the American people through the United States Agency for International Development, intervened with one of the most innovative and regionally sensitive strategy to help children working in the tanneries. Through USAID's Small Grants and Ambassadors Fund program, a 30-month program was launched to reduce child labor through non-formal education by providing primary level education to 500 children aged between 5 to 14 years. Through formation of 12 non-formal education centers, and then mainstreaming them either into public schools or guiding them towards free vocational training. Implementation of the program had its challenges, but through persistent efforts, the team behind the program was successful in convincing both the tannery owners and parents. माओ को ये था कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं तो उससे हमारे जो घर का रोज़गार है उसमें तो कमी आ जाएगी, और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो वर्कर है वो उससे छोड़ के चला जाए। तो हमने ये किया कि उनसे कहा इनसे काम भी करवाएं और इनको जो है वो हम स्कूल भेजें। USAID ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸਕੂਲ, और ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। अगर पहले ये सेंटर खुला होता तो शायद मैं भी कोई अफसर या किसी ओहदे पर होता, शेवर ऑपरेटर ना होता। New to studies, these children were taken aboard by teachers receptive to their past and determined to make their future better through child-friendly syllabus, making it easy as well as interesting. Conscious of the fact that the children worked in an unhygienic environment, regular health and hygiene care were made their daily routine at the educational centers. टीचर ने मुझे सब कुछ सिखाया, उठना बैठना, हाथ मुंह धोना, ब्रश करना, सब कुछ सिखाया। Mother groups were formed to sensitize mothers, To watch the transformations from child labor to child education and to extend their maximum cooperation to ensure the continued education of their children. 18 months of policy and advocacy campaigning and policy dialogues were held to bring together community representatives, decision makers, and stakeholders. The aspiration was to bring forth concerns and develop consensus by raising a unified voice and shared perspectives against the problem. ये बच्चे जब 5वीं क्लास पास कर जाएंगे तो हम इनको गवर्नमेंट स्कूल्स में इनकी मतलूबा क्लासों में दाखिला देंगे और इनको वही सहूलतें फराहम करेंगे जो हमारे रेगुलर तालीम में हासिल कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि इन बच्चों को हम अपने फॉर्मल स्कूल्स में इनरोल करके इनकी सेकेंडरी और हाई लेवल की एजुकेशन में इनको सपोर्ट कर सकें। इस प्रोग्राम को शुरू दिन से देखा है कि स्कूल विजिट किए हैं, इनके टीचर्स से डिस्कशन किया है, पॉलिसी डायलॉग में इनके साथ बात हुई है। ये ग्रास रूट लेवल पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। The confidence of these children is growing every day, not just in centers, but at work too. They no longer feel being forced to work. They rather study with great zeal. They no longer see their future blurred in haze. But what they see is a future full of prosperity and opportunities. मैंने फॉर्मल सेक्टर पे भी काम किया है, लेकिन इतनी खुशी नहीं होती थी जितनी इनको पढ़ा के होती है। बहुत से हीरोज़ इन बच्चों के अंदर छुपे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हें एजुकेट करके उन्हें निखारने की और उन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत है। वो बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जा सकते थे, जब बाहर निकलते थे तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम भी पढ़ रहे हैं यार ये बच्चे। उन बच्चों की जब हम शक्लें देखते हैं कभी कभी तो रोने को दिल करता है। साफ बात है कि यार ये काम हो गया। मेरी पूरी टीम हैरान होती है कि सर हमने ऐसे कर दिया, और जब ये देखते हैं तो वाकई आंखें नम हो जाती हैं। हाँ जी, किधर खड़े हैं? क्लास में। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? उर्दू। बड़े होके क्या बनना है? टीचर, फौजी। पक्की बात? सच्ची? सच्ची। एक दफ़ा का जिक्र है। My name is Ali.
एक बहुत मेहनती बच्चा था। आई लिव इन कसूर। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अब मैं काउंटिंग भी कर लेता हूँ। और फिर वो स्कूल जाने लगा। आई हैव फ्रेंड्स नाउ। अब मैं कहानियाँ पढ़ सकती हूँ। बड़ा होकर पायलट बनूंगा।